ମୁଁ एमजीएम मेडिकल कॉलेज रे पढुथली छोट थली जेतले जाइथली 12 क्लास पढ़ला पर मोर ऑल इंडिया रे सिलेक्शन हो जाइतला। एमजीएम मेडिकल कॉलेज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री। हमर गर्ल्स को ग्रुप थिला 31, सपोज ऑड नंबर रो ग्रुप थिला, तो समस्त आपस रे कथा कि फर्स्ट ईयर तो सेकंड ईयर हला तो हॉस्टल समस्त नहीं गले। I was the only one who was left out. The feeling of FOMO or kathada kochi, it's a very emotional story for me, but that's what made me strong. So 30 girls shifted to the upper floor, they took the rooms, I was the only left out. So mat tale room mili gala, the room was sleeping, pani bahutila, gote room mate mili gala. So I was there, only left out, lonely, second year MBBS student. Upare di jana more colleagues, they are good friends of mine now. ସେମାନେ ବସି କଥା ହଉଛନ୍ତି ଉପରେ ମନାରେ ତଳେ रूम रे मते सुबुची क्लियरली। Imagine I am left out of the entire batch. I have a different room in a different floor and people are talking about କଥା ହଉଛନ୍ତି अध घंटे 2 घंटा मो भीतर कथा चलछि and I am listening to it. That day I felt what loneliness is, what FOMO is. सेई दिन मु डिसाइड कली कि मु लाइफ रे आगु को जाई कि गोटे वुमेन एम्पावरमेंट आइकन बनिबी एंड मु लोगों को कहबी कि केमती माइंडसेट हवा दरकार। नमस्कार, मु डॉक्टर स्वयं प्रभा बराल, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री, सम हॉस्पिटल 2, एंड रिसेंटली मु जीतीची मिसेस यूनिवर्स ग्लोबल 2025। I belong to Bhubaneswar, city of temples. आपण को निजर झियो, मो पेरेंट्स बहुत हार्ड वर्किंग, सबू सक्सेस स्टोरी आरंभ हुए फैमिली। मो बापा अकाउंटेंट थे चिलिका वाइल्ड लाइफ डिविजन रे, मो माँ सेंसस कॉलोनी सेंसस डिपार्टमेंट रे अच्छी, एबे भी अच्छी असिस्टेंट डायरेक्टर। छुआ दिनु बहुत गोटे स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट रे आई वाज रेज्ड। सकाळे उठिले भज गोविंदम रो चांट सुनिकी आमे उठू। Obviously my both parents were working, तो बहुत समय आमे एकला रहू, but books gave me the company. सदाळे घरे गोटे बापांकर बुक्स रैक थाए, सेठी छोटोळे गोटे बही मु पढ़िथिली स्वामी शिवानंद कर गोटे बही थिला माइंड एंड इट्स मिस्ट्री, व्हिच इज द नेम ऑफ माय इंस्टाग्राम चैनल राइट नाउ। आपण माने जो माने भी देखिछथि, तो सेई बुक रु मु बहुत इंस्पायर्ड हेथिली एंड मु भाबिथिली जदि मोर किछि कैरियर पाथ रहिबो ताले that will be related to human mind. And thanks to Lord Jagannath, आज मु गोटे बहुत सक्सेसफुल साइकियाट्रिस्ट and I am an international queen. So as a psychiatrist, as a female psychiatrist and as an international queen, आज मु आपन को दबा को जाउची 6टा माइंडसेट फॉर सक्सेस, जोटा जदि आपण अप्लाई करिवे तो आपण डेफिनेटली सक्सेसफुल हेबे। एज अ सोसाइटी हम सक्सेस को बहुत रॉन्ग नैचे, बहुत पिला आछंती हम पाखु को, बहुत पेरेंट्स आछंती, मैडम आम झियो आपण को बळिया केमती हबो। मु कहली आपण झियो मो बळिया हबो, आपण मो पेरेंट्स को बळिया आगई परिबे। सो सक्सेस गोटे इंडिविजुअल रो केबे भी नुए। सक्सेस बिलोंग्स टू, सक्सेस टे गोटे कलेक्टिव एफर्ट। गोटे लोकर सक्सेस रे बहुत जण को हाथ थाए, इट्स अ कलेक्टिव एफर्ट। आज जदि मु सक्सेसफुल, मो हस्बैंड, मो फैमिली, मो इन लॉज, मो डिपार्टमेंट, माय स्टेट, मो सोसाइटी, मो कंट्री, समस्त से कंट्रीब्यूशन थाए। आ सबुठु बड़ कंट्रीब्यूशन थाए फैमिली रो, हाउ यू आर बीइंग रेस्ड। एबे भी मोर सबु सक्सेस रो क्रेडिट देबी मोस्टली मो पेरेंट्स, मो ब्रदर, एंड केमिति मु छोटोळे मोर अपब्रिंगिंग हेतिला। मु छोटोळे जेतोळे मु एग्जाम्स बेले मते स्ट्रेस लागे, मु मो फादर को बुक रैक रु जाए, आ सेतोळे चिन्मय मिशन रा बुक्स पब्लिश हुए, भगवत गीता रा सीरीज थाए, मु सेतो गोटे बुक्स बाहर करे एंड आई गो थ्रू सम सर्टेन स्टैंडर्ड्स। सेतोळे छोटो थाए, बुझा पड़ेनी, 8th स्टैंडर्ड रे थिली, 9th स्टैंडर्ड रे थिली, भलसे से बुझा पड़ेनी, बट आई रीड कि डू द कर्मा बट डोंट एक्सपेक्ट द रिजल्ट। तो गोटे 8th 9th स्टैंडर्ड रो पिलार माइंड एत स्पिरिचुअलिटी को एक्सेस कर पारेनी, बट ताको बुझा पड़े जे ना एबे पाठटा पढ़ दिए रिजल्ट जा हबो हबो। सो बुक्स हैव बीन अ बिगेस्ट सपोर्ट। तो फर्स्ट मेसेज ऑफ सक्सेस फॉर सक्सेस इज कांस्टेंट लर्निंग। आमे गोटे स्टेज ऑफ लाइफ रे पहुंची जाऊ, तापर हमको लागे कि आउ कोन दरकार पढ़िया। मु आज भी बुक्स पढ़े, नुआ नुआ बुक्स पढ़े। माय माइंड इज क्यूरियस बिकॉज आई हैव बीन रेस्ड लाइक दैट। सो आई रीड न्यू बुक्स every airport I travel, I gather books like hell.
My family tells us, अब बस करो कितना किताब खरीदोगे, but I do. I gather books like hell because they give me the mental support that no one else can give. And also, as a substitute for books, you have good YouTube videos that you can listen. I listen religiously to certain YouTube channels that I'm going to name here: Sandeep Maheshwari, Sadhguru, Lisa Nichols, and there are so many good Mind Valley speakers that you can find, Visan Lakhiani, Paul McKenna, that they will give you such insights जोटा कि तुम माइंडसेट पूरा चेंज कर दबो. माइंडसेट ऊपर बहुत हार्ड वर्क करे पड़े. सक्सेस कहार ओवरनाइट आसी जाएनी. आज लोक कहते मैडम आप केमती जीति गले. मु 2 वर्ष है पैजेंट्री रे एंट्री कली. लास्ट ईयर मिसेस इंडिया रे पार्टिसिपेट कली. ए वर्ष मिसेस यूनिवर्स ऑफिशियल रे पार्टिसिपेट कली. बट यार प्रिपरेशन गोटे पैजेंट्री रे तुमर एक्सटर्नल ब्यूटी देखा जाए तो तुम पूरा एंटायर पर्सनालिटी देखा जाए. हाउ यू स्पीक, हाउ यू टॉक, हाउ यू डील विथ पीपल, हाउ रेस्पेक्टफुल यू आर टुवर्ड्स योर को कैंडिडेट, एवरीथिंग. आउ से पर्सनालिटी दिन में बिल्ड हुए. इट इज अबाउट एवरी टॉक यू लिसन, इट इज अबाउट एवरी बुक यू रीड, इट इज अबाउट एवरी बिहेवियर यू प्रैक्टिस विथ पीपल अराउंड यू. सो दैट थिंग इज गोइंग फ्रॉम years and years and years. So the first rule of success is constant learning. So wherever you are at whatever stage of life, constant learning टा हमको करिया को ही पड़िबो. Second thing, छोटले गोटे कोट पढ़िथिली जोटा मो लाइफ रे मते बहुत इंपैक्ट करथिला. I had the blues that I had no shoes until upon a street I met a man with no feet. आमे छोट छोट कथा रे दुख करछे. अरे एटा हलानी सेटा हलानी एते पैसा परलानी ए कामटा हे परलानी. लोक अछंती आमे इंडिया आमे कंट्री रहउचे लोक खाया पाउनाती. आमे घर गाड़ी चले कि कॉलेज जाए जाऊचे रास्ता देखुचे एत लोक बस भिक मागुंट से देखिए कौन आम कष्ट लगुनि आम माइंड चेंज होनी केते कष्ट लोक मैंने अच्छा. सो ऑलवेज बी ग्रेटफुल दैट एटलीस्ट वी हैव फूड टू ईट 2 times, एटलीस्ट वी हैव क्लॉथ, एटलीस्ट वी हैव अ प्लेस टू लिव. लोकंकर एतिकी बेसिक नीड नाही. एटलीस्ट आम पाखे एतिकी बेसिक अच्छी तापाई जदि आमे ग्रेटफुल रहिबा ताहले आ गोटे बेसिक स्टेट ऑफ हैप्पीनेस हमर रहइबो. तापरे आमे जहा काम करथुवा सक्सेस पछरे दौड़ी की आमे भूली जाउचे बेसिक ग्रेटफुलनेस. तो बीइंग ग्रेटफुल यू विल अचीव मोर एंड मोर. किंतु आमे जदि बेसिक ग्रेटफुल नाही वी विल ऑलवेज बी एंग्जियस कि मोर एटा हलानी सेटा हलानी सेटा हलानी. अरे जोटा तुम पाखरे अछि योर करेंट लाइफ इज अ ड्रीम फॉर मेनी. बहुत यंग डॉक्टर्स माने, यंग लोक माने, यंग स्टूडेंट्स दे कम टू मी टू माय क्लिनिक एंड आस्क मैम लाइफ में क्या है, क्यों जिएंगे. मैं कहा जो तुम अभी जी रहे हो वो हजार लोगों के लिए सपना है. सो प्लीज 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 बी ग्रेटफुल. एवरी डे आई वेक अप दिस कोट हिट्स माई माइंड दैट व्हाट आई हैव इज अ ड्रीम फॉर मेनी एंड दिस इज व्हाट आई टीच माई यंगस्टर्स, माई स्टूडेंट्स, माई पेशेंट्स. सो सेकेंड रूल फॉर सक्सेस इज ऑलवेज ऑलवेज बी ग्रेटफुल. थर्ड थिंग, we always as a society we have been programmed as for craving. मु जेतोळे मिसेस इंडिया जीति की आसिली लास्ट ईयर कि ए वर्ष जेतोळे मु जीति की आसिली मिसेस यूनिवर्स ग्लोबल 2025 आई वाज वेरी एस्टोनिश्ड. मते हस माडे तो लोक पचारंती मैडम कोन पाइले, केते मिलला, कोन पाइले, कोन लाभ हैला. डू यू थिंक मु एते कष्ट करबी किछि पाइ जस्ट फॉर किछि पाइया पई आ जे पाइया पई करछि कोन तक एक्चुअली मिलिबो. When I was competing with so many countries, why do you think I won? Because मु सेठी पाया पाई जाई नथी, मु contribute करिया पाई जाई थी. Because I am a doctor, I am already contributing so much to society, and through this bigger platform, I want to contribute more to the society. Now I have a bigger reach, I have a bigger platform. एबे मो voice internationally आउरी लोक सुनचंती. I want to contribute in better, more ways. So we have to shift our mindset from craving to contribution. आमो mindset सदाले कोन मते मिलला कोन लाभ हैला मोरो. तो the difference between successful people and very successful people is successful people भावने मते मिलिबो कोन, very successful people भावंती मु contribute कोन करबी. and जेतोल तमे contribute करछो तुमको भगवान बहुत देबे. so always keep a contribution mindset, and when you are contributing you are also growing. So in every journey, you should think, how did you grow and what did you contribute? My purpose of every journey is, who can see grow kali? How did I transform myself? Am I looking better than last year? Is my health better than last year? Am I performing better than last year? Did I grow in different areas of my life? And am I contributing better to the society? These are the questions I ask myself.
and जेतोळे तमे contribution विषय भाबुचो definitely तमे grow करिवो, you will be unstoppable. So this is another rule for success is always think of contribution, not for cravings. Out of Israel, the fourth rule is risk taking. Whenever you have a new project, whenever you have a new thing, because nobody will tell you, go do it. मते लोक माने कहले तू तो निजे कलु ना आमे थोड़ी कहतलु जा पार्टिसिपेट करो. When I was very stressed, when I was there were times तो लोग नहीं तो तुमने अपने लिए किया है, हमने थोड़ी बोला था. But the thing is that केही कही भी नहीं जाएगा कर. It is your vision, and your vision should be that big that your vision will benefit millions in the future. But the vision by sacrifice दवाकु पड़ियो, the vision by risk नवाकु पड़ियो. और 90% लोग रिस्क नवाकु चाहते. अब जितने तुम रिस्क नवाकु जीवो, people will warn you, warn करिवे, एटा हबनी, एटा रे प्रॉब्लम हबो. किंतु तमरा सेति की कन्विक्शन अच्छी की तम विजन रे, जदि अच्छी go for it. कि ना in the past there will be a lot of criticism. Last 2 years of this pageant journey, मुझे की criticism सुनी छी. I'll tell you some glimpses. People told me, कार किन दिखांतु, इथर बॉम्बे जाऊँ कार किन दिखांतु, FD को दिखांतु. कार किनले से pride, you see the photographs that have come. कार किनले से country पे crown जीतेरा pride का थोड़ी आसान था. FD को दिखांतु. मुझे थोड़े clinic खोल ली. I opened my clinic above Boca Cafe in Pattaya. That is a showroom space. थोड़े iDestiny रो Apple iPhone रो showroom अच्छी. That is a huge risk that I took. तो लोगों पहले चाली बनी, ये हो बनी. So जितोड़ भी तुम्हें रिस्की काम करे जीवो, people will warn you. But तमरा सेति की conviction अच्छी, एति की belief अच्छी तम vision रे, then go for it. And in the journey there will be a lot of criticism. You should have the power to handle those criticisms. And when you have 100% conviction in your vision, you will handle those criticisms because you know your real worth. Only you know. Your real worth is only decided by you. So risk taking, obviously calculated risk taking, is a factor that decides your success. And I have taken heavy risks in the last 2-3 years. Sometimes even my family is amazed, what are you doing? But then I know what I'm doing because I believe in my visions, even when nobody else is believing. And this is the power of conviction. Last thing, whenever you are in the path of success, there will be too many moments you will feel very lonely. Those are the moments you need to keep yourself up. मैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज रे पढुथली, छोटो थली तो जाइथली. 12th क्लास पढ़ला पर मोर ऑल इंडिया रे सिलेक्शन नहीं आइतला. एमजीएम मेडिकल कॉलेज इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज, वन ऑफ द प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेस इन द कंट्री. आमर गर्ल्स को ग्रुप थिला 31, सपोज ऑड नंबर रो ग्रुप थिला. तो समस्ते आपस रे कथा कि फर्स्ट ईयर तो सेकंड ईयर हैला तो हॉस्टल समस्ते नहीं गले. I was the only one who was left out. The feeling of FOMO or kathada kochi is a very emotional story for me, but that's what made me strong. So 30 girls shifted to the upper floor. They took the rooms. I was the only left out. तो मत तले room मिली गला. The room was sleeping. पानी बहुत ला. गोटे room मत मिली गला. So I was there, only left out, lonely. Second year MBBS student. ऊपर दी जना मोर colleagues. They are good friends of mine now. ସେମାନେ ବସି କଥା ହଉଛନ୍ତି ଉପରେ ମନାରେ ତଳେ ରୁମ୍ ରେ ମତେ ଶୁଭୁଛି clearly. Imagine I am left out of the entire batch. I have a different room in a different floor and people are talking about me. କଥା ହଉଛନ୍ତି ଅଧ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ମୋ ଭିତରେ କଥା ଚାଲିଛି and I am listening to it. That day I felt what loneliness is, what FOMO is. ସେଇ ଦିନ ମୁଁ decide କଲି କି ମୁଁ ଲାଇଫ ରେ ଆଗକୁ ଯାଇକି गोटे women empowerment icon बनिबी and मु लोगों को कहबी कि केमती mindset हवा दरकार. This is again the difference between successful and very successful people. Very successful people never waste time talking, gossiping about other people. Roosevelt रो बहुत भला गोटे quote अच्छी मेरी कहबी. Small minds discuss people, average mind discuss events, great mind discuss ideas. So have a growth mindset and negativity रे निजो time waste करंतु.
स्पेशली निज लोकों को पाई निज फ्रेंड्स को पाई बहुत मजा लगे या नारे कथा बा ता नारे कथा स्पेशली मु देखछि वुमेन कॉन्फ्रेंस रे थिबे वुमेन नारे कथा होतबे व्हाट काइंड ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इज इट सो सी जो फंटा मे बी द हार्डेस्ट मोमेंट्स ऑफ समवन लाइफ so please avoid the negativity be respectful to everyone I own the Mrs. Universe crown Mrs. Universe Global 2025 crown because I was the most respectful candidate I respected everyone I took care of everyone there are people who are competing asking comments एक दूसरे से compete कर रहे हैं but I was the one who was taking care of everyone and I was respectful to everyone and in return everyone was respectful to me and everyone was taking care of me so that kind of womanhood we need that kind of sisterhood we need not yana di kotha kaideli ta di kotha kaideli that gives you a temporary pleasure but tar kichhi mane na it hurts people for life now also after I have the crown and there are a lot of things lot of people talking and all that so chalibo it is a part of our life but don't do that intentionally because your talks are forming cognitive schemas in other people's mind it is affecting their lives because not everyone is so emotionally mature so this is the thing that we have to be respectful towards each other the rule of success ji respectful ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯିବ ଯେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ରାସ୍ତା କାଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଅନ୍ୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପିଟ୍ କରିବ ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ବିଲିଟିଲ୍ କରିବ ସେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଯାଇ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଯେ ରେସ୍ପେକ୍ଟଫୁଲ ତାର କିଛି ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ he or she is unstoppable the last point that I am going to give you don't compete collaborate the era has changed you don't need to compete with your co-fellows because तुम compete करी परिवनी समस्त अलग अलग बैकग्राउंड रो आछथि कहा बाबा पाखे बहुत पैसा अछि कहा बाबा नाही he can the one girl can afford a 1 lakh rupees dress one can afford a 1000 rupees dress how will you compete there is no basis ki ko background ro आछथि ki ko background ro आछथि when I was standing in a competition there are people having very high budget gowns I didn't have that, but I had the personality. I had the mindset. So don't compete. Respect people, collaborate with people. आजकल मैं देखुची बहुत competition. सब जगह रे competition. You don't need to compete with anyone. Just compete with yourself. काली मु ए स्टेज रे थिली, आजी मु एठी अछि. मु काली एति काम करथिली, काली मु एति एक्सरसाइज करथिली, आजी मु एति एक्सरसाइज करली. काली मु एति पाठ पढथिली, आजी मु एति पाठ पढली. You are your biggest competitor. अपने लाइफ रे भलो करछंती कि खराब करछंती your trademark is your standard is you. आउ का संगे रे आपण कम्पीट कर परिबेनी बिकॉज़ ता लाइफ रे कोन चलती तार कोन हार्ट टिप्स तार कोन एडवांटेज कोन डिसएडवांटेज you don't know. So your biggest competition is you. अन्य मानक संगे रे आपण केवल कोलैबोरेट कर परिबे. So even in your hard days be kind because the other person may be having even a harder day. So these are certain rules I gave you, certain mindsets which I personally apply in my life. That's why mu 3 ବର୍ଷ ତଳେ ओडिशा आसिली and I have been rapidly successful one thing after the another thing. ମୁଁ ଆସିକି ମୋର fellowship कली. I built my beautiful Swayam Mind clinic. Then I published my book 30 days to a healthy mind. तापर मो 10टा कोर्स बुक्स जोटा मो आगु भी चलथिला but I have 10 कोर्स बुक्स in your court. I have given enormous amount of speeches and my YouTube channel has 10k followers. I own national crown, international crown, everything in 3 years. Do you think it is humanly possible? People come and ask how is this possible? Because all these rules I told you I follow. I respect people, I collaborate with people, I take advice whenever it is needed. I take everyone with me. मु चाहूची जदी मु ऊपर को चढ़ुची मो संगे मोर पूरा ट्राइब ऊपर को चढ़ु बेका सक्सेस एंजॉय करबा चाहू मु चाहूची मो लोक मो संगे रहन सो माय विजन इज टू ग्रो एंड टू टेक माय पीपल विथ मी आई वांट एवरीवन टू ग्रो टुगेदर एंड लव ईच अदर दिस इज माय मैसेज सो थैंक यू आई एम डॉक्टर स्वयं प्रभा बराल आई एम ए ह्यूमन राइट्स एम्बेसडर मिसेस यूनिवर्स ग्लोबल 2025 एंड साइकियाट्रिस्ट फ्रॉम भुवनेश्वर नमस्कार